न जाने टाइगर जयराम महतो को गिराने के लिए लोग कितना गिरेंगे, न जाने जेएलकेएम को बर्बाद बदनाम करने के लिए ये विपक्ष वाले और ये विरोधी कितना कीचड़ में धुलेंगे। टाइगर जयराम महतो को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, अब जो है उनके पार्टी को बदनाम करने के लिए एक नया राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाने लगा है। लेकिन कहते हैं कि उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे ऊपर वाले ने संवारा। टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के एक नेता हमारे सूर्य नारायण हांसदा का एनकाउंटर होता है। लेकिन एनकाउंटर होने के बाद जो अब खबर निकलकर सामने आ रही है सोशल मीडिया पर, जो सूर्य नारायण हांसदा का सच सामने आ रहा है, उससे यह साबित हो रहा है कि सूर्य नारायण हांसदा का एनकाउंटर होना वो एक एनकाउंटर नहीं था। सूर्य नारायण हांसदा की मौत नहीं हुई है, बल्कि सूर्य नारायण हांसदा शहीद हुए। अब सूर्य नारायण हांसदा शहीद हुए हैं ऐसा लोग कह रहे हैं, एनकाउंटर उनका हुआ है गलत हुआ है ये लोग कह रहे हैं, समर्थक कह रहे हैं। सूर्य नारायण हांसदा के बारे में जो बातें बताई जा रही है कि वो एक स्कूल खोलकर रखे थे, वो स्कूल में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते थे, उन्होंने कोयला जो खनन अवैध रूप से कोयला खनन करके ट्रक से भरकर वो बाहर भेजा जाता था, वो अवैध कोयला खनन माफियाओं से लड़ते थे, भिड़ते थे, कंपनियों से भिड़ते थे। बहुत बड़ा बड़ा सच निकलकर सामने आ रहा है और इससे यह लग रहा है कि सूर्य नारायण हांसदा की मौत नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने शहादत दी है। चलिए हम अभी टाइगर जयराम महतो का एक वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। मैं उन केले के छिलके को कहूंगा, उन केले के छिलकों को, जो केले के छिलके टाइगर जयराम महतो को पता नहीं क्या कुछ बोलते रहते हैं, मैं उन केले के छिलकों को कहना चाहता हूं कि अभी एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं और अगर है दम तो चैलेंज करता हूं, टाइगर जयराम महतो जैसा कर रहे हैं करके दिखा देना, मान जाएंगे कि तुम्हारे पिछवाड़े, मतलब कहते हैं पिछवाड़ा, उसमें गूदा है। टाइगर जयराम महतो का वीडियो क्लिप देखा जाए। My fourth annual report. I am doing my PhD under the guidance of Dr. P. Raman, and my topic is from colonial to post-colonial, a study of the victimization of downtrodden people in the selected novels of Mulkraj Anand and N. Gugiwak Chongo. The first chapter is the introduction of the research. In introduction chapter of this research paper, I will discuss the life, the works, and the awards of Mulkraj Anand and Gugiwak Chongo. I will also deal with my topic that I select for this research work. Anand and Gugi are the notable writers of their own area. They have faced many problems during their writings, but still they continue to highlight the problems of their own country, India and Kenya respectively. Most of their works are mainly concerned with political, cultural and social issues. Gugi and Anand have directly attacked the social injustice, social exploitation, caste discrimination, gender discrimination, religious discrimination. That is the main point and part of their writings. Each sentence written and spoken by Anand and Gugi is full of experience, full of knowledge. They are a great source of inspiration for the oppressed, downtrodden and poor classes. My first chapter is social and political background. Whenever we start anything in our life, the condition of society, the condition of politics always matters. In this chapter, I will discuss the social and political background of Anand's and Gugi's writing. What was the source that we find in the writings whenever they start to write? Because the society of that time was very tough. In India, there was discrimination based on caste. In Kenya, there was discrimination based on class, like race. So the discrimination of caste and class we can see in the writings of Mulkraj Anand and Gugiwak Chongo. The political background.
We know at that time, Kenya and India, both the country, the Britishers rule over the country. And Googie's first of three works of Anand and Googie. The chapter will examine how these political and social conditions influence their writings. I have before I just said how the influence of political and social we can see in the writings of Munkraj Anand and Googie Watyongo. The impact of colonial rule when India and Kenya were facing colonial period of their country. After colonial, when they got independence, what circumstances makes them writers to write the subject and themes. So the second chapter is based on political and social background of their country. Whether through Goris resistance, Muno's suffering, Nazorge's broken dreams, and Wanja's rebellion, both Anand and Googie show how colonial and post-colonial systems dehumanize the oppressed, and why not in all forms is essential. Their works continue to making them a foundational voice in the world. My second chapter is Quest for Identity. We everyone has a desire, has a wish that we have a identity in our society. Without identity, we can't exist in our society. Everyone has a desire, everyone has a wish that he or she has their personal individual identity. So the important thing also occurs in the novels of Munkraj Anand and Googie Watyongo, that is quest for self-identity. The quest for self-identity is a central theme in the colonial and post-colonial period. So this chapter will deal with Anand's and Googie's protagonists search for their identity in the selected novels. In the novels of Anand and Googie, characters grapple with colonial trauma, social hierarchies, gender oppression, economic exploitation. Their journey are not just personal. The characters in the selected novels of Googie and Anand, their journey are not personal but symbolic of national and collective identity crisis in colonial and post-colonial era of their own country. Across these four novels that I have been selected for my research works, the quest for self-identity is deeply connected with social oppression, colonial legacy, gender roles, and political awakening. Anand shows how social reform and moral strength are necessary for selfhood, but also how caste and poverty erase identity. Like character of Muno, like character of Pakha, we can see that how poverty and caste discrimination erase someone's identity. Googie present identity as political and collective journey, where the individual must important historical betrayal and systematic exploitation of their country Kenya. Wanja's quest for identity is a struggle to survival. Wanja in Blood of Beetle is a character, and her quest for identity is a struggle. In every part of the novel, we find that every step, every way, he chooses the path of a struggle. Self-respect, that is most important, and political consciousness in a world where gender oppression, class exploitation intersect. Through the characters of Wanja, Googie is still searching for true liberation. Today, if we talk about our independence India, or we talk about independence Kenya, still they are searching for their identity. Still the female, the women are searching for their identity, the real identity in this independence era of our country. While Nazorge's quest for identity is a struggle to get education. Nazorge is the part of Whip Not Child novel. He is
he belong from a poor family and struggle for education because he know that only education can provide me my identity, because Kenya is under British rule, so only education can provide him a better identity. The third one is understanding the art of characterization. This is very important because the selection of art, it matters in novels issue, novels wider recognition. In this chapter, I will discuss the selection of characters by Anand and Gogi. All the selective characters in these novels for this research are outstanding and very close to reality. They are very close to reality. Whenever we read about it, we feel that the same thing is happened in front of my eyes. That same thing is happened in front of in this society when I exist. Characterization is a center to literary craft in petals of blood. अब मैं उन केले के छिलकों को कहना चाहता हूं कि टाइगर जयराम महतो जी ने जिस तरीके से अपने पीएचडी का जो वो भरने गए थे, अपना सेमेस्टर में जो उनका प्रोजेक्ट था वो रिपोर्ट सबमिट करने गए थे, और जिस तरीके से उन्होंने एक पोडियम पर खड़े होकर इंग्लिश में स्पीच दिया, जिस तरीके से उन्होंने इंग्लिश में संबोधन किया, बस मैं उन केले के छिलकों को कहना चाहता हूं कि ये करके दिखाओ। कहते हैं ना, ये करके दिखाओ भाई, ये करके दिखाओ। तो मेरे उन केले के छिलकों को कहूंगा कि ये करके दिखाओ, और अगर करके दिखाए तो हम कहेंगे कि टाइगर जयराम महतो से भी आगे ये केला का छिलका है। और अगर नहीं कर सकते हो तो मान लो कि सड़े हुए केले के छिलके हो। खैर, अभी सूर्य नारायण हांसदा के ऊपर जो कुछ भी अब सामने जो कुछ भी खुलासा हो रहा है, इस खुलासे से यही साबित हो रहा है कि सूर्य नारायण हांसदा एक समाज सेवी था। और हां, उनके ऊपर जो रंगदारी का आरोप, एफआईआर जो दर्ज था, वो दर्ज था किसी कंपनी के खिलाफ। उन्होंने एक अडानी के कंपनी में जाकर उन्होंने ट्रक जला दिया था, ऐसा बताया गया। उस पर एफआईआर था। अवैध रूप से अगर कोई कोयला खनन कर ट्रक से अगर भेज रहा था तो वो जो है उसको रोक रहे थे, उस पर उनको रंगदारी का आरोप लगा दिया गया। तो कहना यह है कि क्या सच में सूर्य नारायण हांसदा का एनकाउंटर हुआ है या हत्या हुआ? सवाल हो रहा है, हर जगह यह सवाल गूंज रहा है कि सूर्य नारायण हांसदा, जो कि जेएलकेएम पार्टी के बोरियो विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी रहा, जेएलकेएम के टिकट पर चुनाव लड़ा, वो सूर्य नारायण हांसदा, वो सूर्य हांसदा एक समाज सेवी था या उग्रवादी था? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से बताया गया कि उनके ऊपर 25 कांड दर्ज है, जिस तरीके से कहा गया, इससे तो यह साबित हुआ कि सूर्य हांसदा एक बहुत बड़ा उग्रवादी था, आतंकवादी था और एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन क्या इसके पीछे का सच्चाई यही है कि सूर्य नारायण हांसदा उग्रवादी था, एनकाउंटर किया गया वो एक देशद्रोही इंसान था? क्योंकि जैसा दिख रहा है कि सूर्य हांसदा एक स्कूल चलाते थे, जिस स्कूल में काफी बच्चे थे जिनको मुफ्त में शिक्षा मिलती थी, मुफ्त में सब कुछ मिलता था। वीडियो क्लिप सामने आया है, सभी लोग देखे भी होंगे। सवाल तो है कि सूर्य हांसदा के साथ हुआ क्या था? अरेस्ट होना, रात में जंगल में जाना, मुठभेड़ होना, सुबह तक मौत की खबर आनी और कहना कि एनकाउंटर हो चुका है। क्या है सच? टाइगर जयराम महतो जी ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, आप लोग क्या चाहते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।